सुप्रीम कोर्ट की हद तक ही रहना है, किसी बाहर से आके कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। जस्टिस मंसूर शाह भी इसी बुनियादी नुक्ते के गिर्द ही अपने सवालात पूछते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियार को छेड़ने से अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ने वाली कोई बात नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर कोई ये कहे कि 14 दिन के अंदर केस को मुकर्रर कर दिया जाए या उसे लिस्ट कर दिया जाए, जो कि कानून के कहा गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 55,000 के करीब केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। अगर जल्दी कानून लगा देंगे तो उनका फैसला भी जल्दी करने में हमें आसानी होगी। अगर बतौर चीफ जस्टिस सारा इख्तियार किसी एक फर्द वाहिद के पास रहे और वो केस को समाज के लिए फिक्स ही ना करे तो कोई क्या कर सकता है। तो बहुत सारे दलाइल इस हद में भी दिए गए, सवालात भी हुए। तो अभी तक जो अभी मैं समझ पाया हूँ, जो मंजरनामा अभी तक समझ आ रहा है कि जजेस का एक ग्रुप जो है वो ये चाहता है कि ये कानून जो है वो बरकरार रहे और ये अपनी बेहतर फॉर्म में है, जबकि दूसरा ग्रुप है वो ये दलाइल देता है कि बेशक ये कानून पार्लियामेंट ने किया है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है सब्जेक्ट टू लॉ, वो ये काम कर नहीं सकते थे कि वो अदलिया की आज़ादी में किसी तरह से मुदाखलत करते, क्योंकि रूल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं। तो इस सिलसिले में जो खातून जजेस हैं उनके भी हमने आर्गूमेंट्स देखे, जो वो दलाइल देते हुए क्वेश्चन करते हुए नजर आए, उससे भी ये बात पता चलती है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर 3 रुकनी कमेटी कहती है कि 5 रुकनी बेंच इस एक्ट के खिलाफ कोई अपील सुन सकता है, तो इसमें क्या कबाहत है। फिर ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर कोई लार्जर बेंच किसी केस का एक बार डिसीजन कर ले तो फिर उसके बाद नजरसानी की अपील कहाँ पे आएगी, क्योंकि एक लार्जर बेंच इस केस का ऑलरेडी फैसला कर दे तो नजरसानी किसके पास जाएगी। तो ये सारे मामले हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना है कि वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इस मुल्क में कई बार मार्शल लगा, उसकी भी मिसालें दी और कहा कि उस दौरान भी कई जजमेंट्स हमने देखी हैं, लेकिन हम उस चीज के ताबे चलेंगे जो आइन में लिखा गया है। पार्लियामेंट अगर बेहतरी लाना चाहती है किसी कानून के जरिए तो उसे क्यों समझा नहीं जा रहा, इसकी मुखालफत क्यों की जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये बुनियादी सवाल है जो वो वकला से बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। एटीसी इस्लामाबाद ने परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। जज ने इस्तफसार किया, परवेज इलाही की जान कब छूटेगी। परवेज इलाही ने कहा, मुझे इस्लामाबाद से वापस लाहौर ले गए, मेरी मुलाकात भी फैमिली से नहीं करवाई गई। मजीद क्या तफसीलात है फारूक एजाज से जानते हैं। फारूक बताइए। जी बिल्कुल, परवेज इलाही को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जिस पर अदालत ने जो है वो परवेज इलाही को जमानती मचल के जमा करवाने तक जो है वो जुडिशियल कर दिया था। ताहम इसी दौरान जो महकमा एंटी करप्शन पंजाब है, उन्होंने परवेज इलाही के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त दायर कर दी अदालत में, जिस पर जज अबुल अस्ताद का ये कहना था कि परवेज इलाही का रिमांड मांगा जा रहा है, राहदारी रिमांड मांगा जा रहा है, जिस पर वकील सफाई सरदार अब्दुल राज़िक का ये कहना था कि परवेज इलाही पर इल्जाम है कि उन्होंने साफ भर्ती किया। क्या वजीर आला अपना चीफ सेक्रेटरी तैनात नहीं कर सकते? क्या परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा कल परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और कल ही अदालत ने परवेज इलाही को डिस्चार्ज किया और फैसला इनके मुंह पर मारा। इसके अलावा सरदार अब्दुल राज़िक का यह भी कहना था कि वजीर आला के पास इख्तियार है कि वो अपना स्टाफ तैनात करे। बहुत शुक्रिया फारूक एजाज। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज। This half-hourly clock is brought to you by सेफगार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। सेफगार्ड करें हम, जर्म से दूर रहे हम। शप 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 भागे जर्म्स। याद रखना, सिर्फ सेफगार्ड से शप शप शप। सेफगार्ड से जो नहाए, घर तो जर्म से बचता जाए। शप 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 चलता जाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मेरे बाल हैं। आई लव इट। डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है। डोंट वरी, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है।
क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। सुप्रीम दानेदार, इतने बड़े दाने और उतने ही जायकेदार। सुप्रीम जमाए अपना रंग। सुप्रीम दानेदार, दाने हैं इतने बड़े कि इसे सब मान जाएंगे। अब आ गई है सुप्रीम दानेदार में भी बड़ा दाना बड़ी जायकेदार। हुआ कुछ यूं 25 साल पहले। बनी एक ऐसी जगह शुरू हुआ ये सिलसिला। कौन हो कहाँ से हो पूछे ना कोई है खुशियों की वजह ये बराबरी की जुबान। बना ऐसा जहां बराबर सब यहां। रॉयल वॉशिंग मशीन करे आपकी जिंदगी आसान। पावरफुल और बड़े पल्सेटर से मुकम्मल धुलाई, 3-वे वाटरफॉल से कम डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़े। इसका मुनफरिद जेट स्ट्रीम करे कपड़ों की 3D रोटेशन वॉश। पावरफुल, ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए। और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। वाह, इतने साफ, ये तो रॉयल वॉशिंग मशीन का कमाल है। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। चाय चाहिए कौन सी जगह, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर बाय लॉरियल पैरिस। इसमें शामिल हाइलुरॉनिक एसिड जो बालों को इंस्टेंटली मॉइस्चर से भरकर उसको लॉक करे और रखे 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड एंड फुल ऑफ लाइफ। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू बाय लॉरियल पैरिस। We're worth it. सुप्रीम दानेदार, इतने बड़े दाने और उतने ही जायकेदार। सुप्रीम दानेदार, दाने हैं इतने बड़े कि इसे सब मान जाएंगे। अब आ गई है सुप्रीम दानेदार में भी बड़ा दाना बड़ी जायकेदार। रॉयल के स्टाइलिश डिजाइन हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। Showcase the grandness in your sanity wear. 3-star ceramics. रॉयल वॉशिंग मशीन करे आपकी जिंदगी आसान। 3-वे वाटरफॉल से कम डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़े। इसका मुनफरिद जेट स्ट्रीम करे कपड़ों की 3D रोटेशन वॉश। पावरफुल, ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए। और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। आए मिलकर जिम्मा उठाएं, बनाएंगे कराची का सबसे बड़ा और जदीद तरीन कैंसर अस्पताल, शौकत खानम हॉस्पिटल कराची, जहां होगा मुस्तैद मरीजों का मुफ्त इलाज। क्योंकि जब हम पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे तभी तो इख्तिताम तक जाएंगे। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय। एक और कप चाय, टपाल दानेदार। दराज ला रहा है शादी वीक। अब लगेज, फर्नीचर, डेकोरेशन आइटम्स के लिए बाजार नहीं, दराज ऐप पे जाएं। वक्त और पैसे दोनों बचाएं। दराज शादी वीक, शादी के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करो, सोच को दराज करो। Buy any 3 products for ₹17.99 and get 500 rupees off with free shipping. जब यूफोन 4G देगा सुपर कार्ड ब्रांड में 20 GB डेटा, 450 ऑफ नेट मिनट्स, तो लाइफ में हो जाएगा सब कुछ ब्रांड।
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इस मुल्क की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो वकील रहनुमा है और कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उन सबसे राय मांगी है कि उनके नजदीक काजी फाइज ईसा साहब का सबसे बड़ा चैलेंज इस नए जुडिशियल ईयर में क्या होगा। बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट है प्रोग्राम के पहले हिस्से में, इसको पेश करेंगे। उसके बाद राजा रियाज साहब नून लीग को प्यारे हो गए हैं, बाजाब्ता तौर पर उन्होंने शिरकत कर ली है पीएमएलएन में, उनसे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और आखिर में पीपल्स पार्टी में मुकाबला नून लीग खेल जारी है, लेकिन इसमें लग रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है। बात करेंगे पीपल्स पार्टी से कि क्या ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है या वाकई कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो इस तरीके से सामने आ रही हैं। आगाज करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज हल्फ उठा लिया। आज सुबह 11:30 बजे हल्फ बर्दारी की ये तकरीब हुई। आज पहले ही दिन कुछ अनोखी बातें हुई हैं, कोई डिफरेंट चीजें हुई हैं। और पहले गुफ्तगू का आगाज उससे करते हैं, लाइटर मोड से, और उसके बाद हम बात करेंगे उन गंभीर सियासी और कानूनी चैलेंजेस की, और खास तौर पे जो अदलिया के अंदर एक बड़ी पोलराइज्ड और डिवाइडेड लेगेसी है, उसको कैसे इकट्ठा करना, उसको कैसे यकजा करना है। लेकिन जो अनोखी नई बातें हुई, जरा उससे आगाज करते हैं। सबसे पहले तो जी हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी, उस मीटिंग बात ये थी कि आज काजी साहब की अहलिया उनके साथ खड़ी हुई। इस जेस्चर को सराहा इसलिए गया है क्योंकि दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब इस तरह के हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं तो उनमें खवातीन जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिनकी उतनी ही कंट्रीब्यूशन होती है, अगर डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली, किसी भी अपने घर के शख्स के करियर के अंदर, तो उनको एक्नॉलेज करना, उनको सामने लाकर पूरी दुनिया के सामने इज्जत देना, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी नाइस जेस्चर। इससे पहले हमने कुछ और हल्फ बर्दारी भी देखी मुख्तलिफ चीफ जस्टिस की, एटलीस्ट जो मेरी याददाश्त है, मैंने जो पूछा जितने भी पॉलिटिकल हिस्टोरियंस हैं, इससे पहले ऐसा नहीं किया गया। सो ये अगर हम कहें कि एक अनोखी इंटरेस्टिंग चीज थी और अच्छी पॉजिटिव बात है। आई होप कि और जो पॉलिटिकल हो, लीगल हो, या किसी भी तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में आगे बढ़ते हैं लोग या टॉप ओहदों पे पहुंचते हैं, वो अपने पार्टनर को जरूर इस तरीके से क्रेडिट दिया करें। अगली बात, एक और अनोखी चीज वो ये हुई कि पहले दिन ही हमने देखा कि फुल कोर्ट बैठ रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये वो बिल है जिसके वजह से काजी साहब बहुत सारे बेंचेस में नहीं बैठे हैं। सो इस हवाले से अपनी इंटेंट उन्होंने 2 दिन पहले शो कर दी। कल ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, फुल कोर्ट इसका फैसला करेगा। और एक और जो खबर है, इत्तलात के मुताबिक शायद इसको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाए। तो ये भी एक अनोखी, एक नई चीज है जिसको हमने आज ऑब्जर्व किया। जो तीसरी अनोखी चीज है वो ये है कि पहली मर्तबा मुल्क की तारीख में एक खातून को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है, और जजीला असलम है, इनकी खिदमात लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार इनको तैनात कर दिया गया है। ये भी एक अनदर फर्स्ट, एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा फैसले अब उर्दू में भी जारी किए जाएंगे। एक और जो आज डिसीजन सामने आया, तो पहले हमने कहा जरा जो अच्छे ऑप्टिक्स हैं, जो अच्छी चीजें, जो फर्स्ट टाइम बहुत सारे काम हो रहे हैं, उससे आगाज करते हैं, क्योंकि इसके आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस उठाए खड़े हैं। मुल्क एक बड़े ही क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है। हमने इस मुल्क के जो टॉप लॉयर्स हैं, इस मुल्क के जो तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सबसे एक ही सवाल पूछा। हमने कहा कि आपका क्या ख्याल है, नए चीफ जस्टिस साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। आगाज करते हैं इस मुल्क के तमाम वुकला की रिप्रेजेंटेशन से, और ये क्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड है। एक ही सवाल था कि आपके नजदीक काजी फाइज ईसा साहब का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। तकरीबन 16 के करीब लॉयर्स से हमने बातचीत की, उनका क्या कहना था, जरा ये सुनिए। काजी फाइज ईसा साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, और तमाम जजेस को इकट्ठा करके उनको साथ लेकर चलना है। और जजेस से भी हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जो साबका रजीम में कोई धड़ाबंदी या ग्रुप बंदी हुई थी, उससे इज्तनाब करेंगे, क्योंकि इससे इदारा का भी नुकसान है और इस मुल्क का भी नुकसान है। 3 बड़े चैलेंजेस हैं और वो जल्द ही उनके सामने आ रहे हैं। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एक तो वो चैलेंज है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, वो केस पेंडिंग है, बहुत दफा बहस कर चुके हैं, अभी तक उसका फैसला किए बगैर ही बंदियाल साहब रुखसत हो गए। तो दूसरा और तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इलेक्शंस को 90 दिन के अंदर कराना, अपना टाइमलाइन जो है आइन की उसको ऑब्जर्व कराना। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज उनका ये होगा कि वो अपना एक मुनकसिम
अदालत को वो इकट्ठा करें और अपने ब्रदर जजेस के साथ जो है मिलकर एक ही सुप्रीम कोर्ट बनाकर और यकता फैसले दें, ताकि कौम और मुल्क में ये जो स्याह बादल है ये छट जाएं और आइन की बालादस्ती को मुसल्लम करवाएं और इलेक्शंस को जो है इनकाद शफाफ करवाएं, अपनी आइनी मुद्दत के अंदर रहते हुए करवाएं। ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है कि इसको आइन की पटड़ी पर, जमहूर की पटड़ी पर मुल्क को वापस लेकर आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब, उनके लिए सबसे जो पहले और बड़े दो चैलेंज है, नंबर 1 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो उसको कलअदम करार देते हैं या मेंटेन रखते हैं। अगर मेंटेन रखते हैं तो बेंच की कंपोजिशन जाहिर है 3 जो सीनियर जज हैं उनके पास चली जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके लिए है वो है इलेक्शन जो है 90 डेज में कराना, और इलेक्शन की डेट जो है चूंकि प्रेसिडेंट साहब ने तो तजवीज कर दी है, लेकिन किस तारीख को इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के और 4 सूबाई असम्बलियों के, ये 2 मेरे ख्याल में सबसे बड़े चैलेंज जो है मंडे को जब वो आएंगे ऑफिस में तो सबसे पहले ये उनको फेस करने पड़ेंगे। देखिए काजी साहब जो जिन चीजों पे एतराज थे उनके 100 मोटो केसेस जो हैं उनको एक खास लॉ बनाकर या रूल्स बनाकर लेने चाहिए। दूसरा उनका एतराज ये था कि बेंचों की जो तश्कील है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस करना चाहिए। सबसे बड़ा जो उनका मसला होगा वो यही होगा कि ये रूल्स को किस तरह और कितनी देर में अमेंड कर सकते हैं, और अगर अमेंड कर लें रूल तो उस पर अमल दरामद किस तरह कराया जाएगा, ये सबसे मुश्किल चीज है। 5 चैलेंजेस हैं जो उनको इस पे नबरत आजमा होना पड़ेगा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस के दरमियान तकसीम का तासुर है उसको सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। आइन और कानून की बहाली और बुनियादी हुकूक की बहाली, ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त 90 डेज का दरमियान इलेक्शन का होना, फैसलों पे अमल दरामद होना, ये चौथा बड़ा चैलेंज होगा। और 5वां बड़ा चैलेंज अदलिया की आजादी। मेरे ख्याल में काजी साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो खलीज पुर करना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि उनके साथ बाकी जजेस के रवैये से शुरू हुई थी जब उनके खिलाफ रेफरेंस थी। ये खलीज पुर करना और फिर उसके पुर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को वापस ट्रैक पे लाना, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये मुल्क फेस कर रहा है, जो इस मुल्क को दरपेश है, उन सब का जवाब देना। 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से कोर्ट की सिमत का तयन करना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से तमाम कोर्ट को अपने साथ लेके चलना। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। इस्लामाबाद के सिनाड़ी गांव में अराजी का कब्जा छुड़ाने के दौरान मुश्तल अफराद ने पुलिस पर हमला कर दिया है। इस बारे में जानेंगे ज़ुल्कनैन हैदर से। ज़ुल्कनैन, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सरकारी जमीन वागजार कराने के दौरान जो है जो रिहायशी हैं उन्होंने हमला किया है और फायरिंग भी की है, जिसके नतीजे में 3 डीएसपी समेत 11 जो अफसरान एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि एक इंस्पेक्टर ताहिर नियाजी है उनको गोली लगी है और वो भी जख्मी हो चुके हैं। जख्मी को फौरी तौर पे पिंड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की मजीद नफरी जो है वो भी भिजवा दी गई है। अभी इतना ये मिली है कि गांव के लोग पिंड अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके लिए एफसी और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी पिंड अस्पताल भी मुंतकिल कर दी गई है। जी ठीक है ज़ुल्कनैन, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस काजी फाइज साहब के आने वाले दौर के लिए बहुत ही कठिन हालात यूं हैं कि अभी मिसाल के तौर पर मिलिट्री कोर्टों वाला मामला ज़ेर इल्तवा है, फिर उसके बाद 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन कराने हैं उसकी एक डेट के हवाले से भी पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर पंजाब असेंबली से तौहीन अदालत की कार्रवाई वो अलग पेंडिंग है, फिर आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के हवाले से वो प्रोसीजर सारा पेंडिंग पड़ा है, फिर हाईकोर्ट जो अपना कोर्ट के प्रोसीजर एंड जो अपना रेगुलेट करने के हवाले से जो एक्ट है वो अभी 18 तारीख को लगा दी है। वो है उनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके सामने आएगा वो पेंडेंसी है जो सुप्रीम कोर्ट की 50,000 से ज्यादा है। उसके बाद उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डिवीजन इन द सुप्रीम कोर्ट है कि जो एक परसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो हैं वो डिवाइड हैं। देखें काजी फाइज साहब के जो अपकमिंग टर्न्योर है उसके अंदर मेरी नज़र में 3-4 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहला मेन चैलेंज तो ये है जी उनका जो वीक सुप्रीम कोर्ट उन्होंने इनहेरिट किया है
وہ سپریم کورٹ جس کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوئے ان کو انہوں نے واپس اپنی جو ایکچوئل جو ان کی پوزیشن ہے سپریم کورٹ کی کہ جس کے آرڈرز امپلیمنٹ ہو اس پہ لے کے آنا ہے. تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. فائزہ صاحب کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو یہی ہوگا نا کہ جو بندیال صاحب کے دور میں ججز کے درمیان تقسیم تھی اس کو بے قابو پانا قاضی صاحب کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ایروڈ ہوئی ہے اس ایروژن کو ری اسٹیبلش کرنا اس کے لیے قاضی صاحب کو جو ہے کافی محنت کرنی پڑے گی. میرے نزدیک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ نئے چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس ملک میں آئین کی حکمرانی کو بحال کرنا, آئین کے تحت جو طے شدہ کنفائنز ہیں ان کو انفورس کرنا اور ان تمام ججمنٹس کو انفورس کروانا جو کہ ان کے پریڈیسیسر عمر عطا بندیال صاحب اسپیشلی آئینی کانٹیکس میں دیکھے گئے ہیں, جس میں پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کا کیس ہے اور آگے وفاقی الیکشنز جو ہیں ان کا بھی معاملہ آ رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آئین کی حکمرانی کو بحال کرنے سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. دوسرا, انہوں نے ود ان جوڈیشری جو ڈویژن ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے لیے آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج ہوگا سپریم کورٹ کی ساکھ کو بحال کرنا اور اپنی صفوں میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں ایک یونٹی پیدا کرنا جہاں وہ ایک دوسرے کی حیثیت کی اور قابلیت کی ایک رسپیکٹ کر کے چلیں. میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بطور چیف جسٹس سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے اندر جو یونٹی وہ لانی ہوگی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آتے ہی 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, یہ آئین پاکستان کہتا ہے. اس حوالے سے ہم نے درخواست دی ہوئی ہے اس کے اوپر فوراً فیصلہ ہو. عیسیٰ صاحب کے سامنے سب سے بڑا چیلنج انتخابات کا ہوگا. عام انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور اس میں وہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں. سو اکراس دا بورڈ جو اگریمنٹ ہے وہ یہ کہ ایک منقسم سپریم کورٹ انہیرٹ کر رہے ہیں قاضی صاحب, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو فیصلوں کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پہلے چیلنجز تھے ان کو بھی پار کرنا ہے. تو یہ اس ملک کے جید قانون دانوں کے اکراس دا پارٹی ڈیوائڈ, اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اور آئیڈیولوجیکل ڈیوائڈ یہ رائے تھی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کورٹ رپورٹرز ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے اس پوری تاریخ کا, جوڈیشل پاکستان کی جو پوری ہسٹری رہی ہے, کیونکہ ان کی آنکھیں, ان کے کان, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں جو شاید ایک عام آدمی تک نہ پہنچے انفارمیشن. تو اس ملک کے جو ٹاپ کورٹ رپورٹرز ہیں ان سے ہم نے یہ سوال کیا کہ ان کے نزدیک, کیونکہ انہوں نے اتنے سارے سال عدالت کے معاملات کو کور کیا ہے, سب سے بڑا چیلنج کورٹ رپورٹرز کی نظر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کیا ہے, ملاحظہ کیجیے. دیکھیں, سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلی ہوگی. اگر آپ پچھلے 6 سال کے چیف جسٹس 4 گزرے ہیں, ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ رہا ہے ہر لحاظ سے. تھوڑی بہت تبدیلی آئی. جسٹس قاضی فائز صاحب کو جو ہم دیکھا ہے وہ بالکل مختلف ان کی سوچ ہے ہر لحاظ سے, اور انہوں نے جو خطوط لکھے کہ سپریم کورٹ میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے, تو اب وہ جو کچھ وہ کہتے رہے وہ بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ ان پہ عمل درآمد کریں گے. چیف جسٹس کے اختیارات میں جو ہے ٹرانسپیرنسی, اور سپریم کورٹ میں جو کیسز کی فکسیشن ہے اس میں ٹرانسپیرنسی. ایک الزام لگتا رہا کہ سپریم کورٹ کی میں یا اعلی عدلیہ میں پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوتی ہے جوڈیشل پروسیڈنگ میں. یہ اس کا خاتمہ جو ہے بڑا چیلنج ہے. میری نظر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ میں اتحاد پیدا کرنا ہے. 1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی باقاعدہ گروپنگ نظر بھی آتی ہے, عدالتی فیصلوں میں بھی نظر آتی ہے. دوسرا, عدالتی احکامات نہ سپریم کورٹ کے مانے جا رہے ہیں, نہ ہائی کورٹ اور نہ ماتحت عدلیہ کے ان احکامات پر عمل کرانا. تیسرا, 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہے, زیر التوا پڑے ہوئے ہیں. عام لوگوں کا کیسز کو پرائرٹی دینا, سیاسی کیسز کو بھی سننا لیکن عام لوگوں کے کیسز کو پرائرٹی دینا. چوتھا, 90 روز میں جو الیکشن پنجاب میں فیصلے کے باوجود نہیں ہوئے, آئین میں لکھا ہوا ہے ابھی دوبارہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے. یہ چوتھا بڑا جو ہے وہ چیلنج ہوگا. اس کے علاوہ ارشد شریف کا کیس ہے, عمران ریاض جو ہے وہ لاپتہ ہے, لوگوں کے ہیومن رائٹس جو ہے, ان کی جو شہری آزادیاں ہیں ان کو جو ہے وہ یقینی بنانا, یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سامنا ہوگا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہوں گے, جس میں ایک بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو جج صاحبان میں اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کر کے جج صاحبان میں اتحاد کیسے پیدا کرنا ہے. سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہوگا جو کہ ابھی سپریم کورٹ میں موجود نہیں ہے
वो होगा इंतखाबात के हवाले से। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खत तो लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने चैलेंज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा अदलिया की अथॉरिटी को रिस्टोर करना, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि अदालती फैसले आते हैं, अहकामात आते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता, जिसका शिकवा कई जजेस की जानिब से, बिलखसूस हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से किया जा रहा था और वो अपने मामला जो हैं कई बार उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखे भी थे। देखें, जुडिशरी इस वक्त डिवाइड है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जिस तरह से यहाँ पे पिटिशंस को इंटरटेन किया गया, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को अदलिया को मुत्तहिद करने के लिए आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के लिए स्टेप्स उठाने होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरी नजर में है वो खुद उनके अपने बयानात हैं जो उन्होंने वो देते रहे हैं कि क्या काम किस तरीके से होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक हो, सच्चाई हो। नए चीफ जस्टिस काजी फायज दराज ला रहा है शादी वीक। अब लगेज, फर्नीचर, डेकोरेशन आइटम्स के लिए बाजार नहीं, दराज ऐप पे जाएं। वक्त और पैसे दोनों बचाएं। दराज शादी वीक, शादी के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करो, सोच को दराज करो। Buy any 3 products for ₹17.99 and get 500 rupees off with free shipping. वाह भाई, मेरी हेल्प। अच्छा, हर काम में तो हेल्प करता हूँ। अच्छा, तो भाई कल से कुकिंग, डस्टिंग, ग्रोसरी आप ही करना और कपड़े भी। कपड़े वो तो मैं धो लूंगा। नहीं नहीं, कपड़े मैं ही धोऊंगी। मैं धो लूंगा ना। रॉयल वॉशिंग मशीन करे आपकी जिंदगी आसान। पावरफुल और बड़े पल्सेटर से मुकम्मल धुलाई, 3-वे वाटरफॉल से कम डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़े, जिसके सिंक लिड से हो इजी सफाई। इसका मुनफरिद जेट स्ट्रीम करे कपड़ों की 3D रोटेशन वॉश। पावरफुल, ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए, और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। वाह, इतने साफ, ये तो रॉयल वॉशिंग मशीन का कमाल है। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। AC/DC वाटर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। Introducing the new and bigger higher twin inverter plus ASPE sterilization and HCS freshness technology digital control system with 4 sensors, real freshness leader, higher. KSK इंटरचेंज की प्राइम तरीन लोकेशन पर वाक़े अल-कबीर ऑर्चर्ड, जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता, तरक्याती काम तेजी से जारी, 3 मरला से 2 कनाल तक के महदूद प्लॉट्स, बुकिंग सिर्फ 2.5 लाख रुपए से। टोल फ्री नंबर 0800-11-339। सुप्रीम दानेदार, इतने बड़े दाने और उतने ही जायकेदार। सुप्रीम दानेदार, दाने हैं इतने बड़े कि इसे सब मान जाएंगे। अब आ गई है सुप्रीम दानेदार में भी बड़ा दाना, बड़ी जायकेदार। क्योंकि मुल्तान में अब अगर कारोबार होगा तो DHA मुल्तान में होगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। चाय चाहिए कौन सी चला, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। हम झूम गए हर बार, रंगी मेरे बाल जो झूमे। Samsol hair color. Samsol। दराज ला रहा है शादी वीक। अब लगेज, फर्नीचर, डेकोरेशन आइटम्स के लिए बाजार नहीं, दराज ऐप पे जाएं। वक्त और पैसे दोनों बचाएं। दराज शादी वीक, शादी के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करो, सोच को दराज करो। Buy any 3 products for ₹17.99 and get 500 rupees off with free shipping. सुप्रीम दानेदार, इतने बड़े दाने और उतने ही जायकेदार। सुप्रीम जमाए अपना रंग। सुप्रीम दानेदार, दाने हैं इतने बड़े कि इसे सब मान जाएंगे। अब आ गई है सुप्रीम दानेदार में भी बड़ा दाना, बड़ी जायकेदार। We shine with sparks.
शादी वीक। अब लगेज, फर्नीचर, डेकोरेशन आइटम्स के लिए बाजार नहीं दराज ऐप पे जाएं। वक्त और पैसे दोनों बचाएं। दराज शादी वीक, शादी के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करो, सोच को दराज करो। Buy any 3 products for ₹17.99 and get 500 rupees off with free shipping. मास्टर रॉयल मैट इमल्शन, जो देता है आपकी दीवारों को रॉयल ट्रीटमेंट। मास्टर रॉयल मैट इमल्शन, दाग ठहरने ही न दे। मेरी पूरी फैमिली के कपड़े धुलते हैं सिर्फ प्रियो से, इसीलिए तो मैं कहती हूँ लाइफ के हर ओ के लिए प्रियो। अब कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी लग जाए? जब निपॉन पेंट हर जगह आसानी से मिल जाता है तो आप हमारी जिंदगी से रंग क्यों छीन रहे हैं? निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशिया's #1 पेंट ब्रांड। These headline news are brought to you by Dove Intense Repair, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करें। Dove Intense Repair। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ऊपर वाले को हिसाब देना, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को। मैं तो बहुत खुश हूंगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ। बराए करम अगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कानून अच्छा बना है या नहीं, हम पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करेंगे। आइन पर जजमेंट्स हावी नहीं होते। सबसे पहले हम अल्लाह को जवाब दे हैं, फिर किसी और को। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं तो मैं जानूं और पार्लियामेंट जाने। अब तक एक लफ्ज नहीं सुना कि ये एक्ट आइन की किस शख्स से मुतसादम है। कानून को उड़ा देंगे तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा। क्या आप चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर एहतसाब से बाला बनाना चाहते हैं? रेकोर्डिक केस में मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हम कहीं चीफ जस्टिस की जात को नुकसान न पहुंचे। मैं आइन और कानून के ताबे हूं। मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे, मैं इन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। मुल्क की तारीख में पहली बार कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। कौन सा फंडामेंटल राइट्स आप पिटिशनर का वायलेट हुआ है जिस पे आप 184(3) में आए? पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म किया है। ये तो आपको सराहना चाहिए। ये तो आपके बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। जस्टिस अतर मिन्हुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप तमाम इख्तियारात एक शख्सियत को देने के हामी हैं। एक शख्स बेंचेस बनाए और इस तरह फैसलों पर असरअंदाज हो, तो क्या आप यही रवायती तरीका चाहते हैं? शायद यही गलती पार्लियामेंट दुरुस्त करना चाहती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, यही रूल सुप्रीम कोर्ट बनाते तो दुरुस्त, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो गलत। क्या आप पार्लियामेंट को महदूद रखना चाहते हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे कि एक के बजाय 3 लोगों को इख्तियारात मिल रहे हैं? Can Parliament make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court? That rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. क्या ऐसा कानून बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं थी? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है? फुल कोर्ट समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात।
کہا پارلیمنٹ کون ہوتی ہے جو کہے 3 ممبر کمیٹی بنے گی 5 ممبر کیوں نہیں؟ یہ کام چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کا ہے. سپریم کورٹ کا خود کو ریگولیٹ کرنا اس کا بنیادی حق ہے. جسٹس اعجاز الحسن بولے سوال یہ ہے کہ آئین کے تحت ہمارے رولز بنانے کے اختیارات کیا ہیں؟ کیا پارلیمنٹ قانون سازی اور رولز کو اوور رائٹ کر سکتی ہے یا ان میں ترمیم کر سکتی ہے؟ عدالت اور سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے، مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. تو برائے کرم آپ ایسا ان سے سلوک کیجیے جیسے کہ ایک میزبان مہمان سے کرتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ پہنچنے پر استقبال، گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا. پولیس کو اپنی ذمہ داری دل جمی سے ادا کرنے کی ہدایت. سپریم کورٹ کے عملے سے کہا عدالت لوگ خوشی سے نہیں اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، سائلین سے ایسا سلوک رکھیں جیسا ایک میزبان اپنے مہمان سے کرتا ہے. چیف جسٹس کا پروٹوکول لینے سے بھی گریز، ذاتی گاڑی میں عدالت پہنچے. ہو سکتا ہے سارے ایکٹ کو شاید کل عدم نہ کریں. 1980 کے رول جو ہیں وہ سارے جج صاحبان سپریم کورٹ نے بیٹھ کر اس کو فریم کیا ہے اور وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم ہوتی رہی. امید ہے اسی ہفتے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلہ ہوگا. توقع ہے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے گا. ماہر قانون سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں یہ بات خوش آئند ہے کہ چیف جسٹس نے بار بار اپنے حلف کا ذکر کیا ہے. 90 دن میں الیکشن جمہور کو ان کا حق دینے کی شقوں پر جلد از جلد فیصلہ سنایا جائے. جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ چودھری پرویز لاہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں 1 روز کا راہداری ریمانڈ منظور کر لیا. سابق وزراء کو اینٹی کرپشن پنجاب کے حوالے کر دیا گیا. دوران سماعت جج نے استفسار کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خلاف اینٹی کرپشن کی انکوائری چل رہی ہے؟ پرویز لاہی بولے میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ میرے خلاف اینٹی کرپشن کی انکوائری چل رہی ہے. رہائی کے احکامات کے باوجود پرویز لاہی کی گرفتاری، عدم پیشی پر آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری. لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اکبر ناصر خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. چیف کمشنر اسلام آباد کے بھی قابل ضمانت وارنٹ جاری. توہین عدالت کیس میں ڈی آئی جی آپریشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایس پی سیکورٹی ہائی کورٹ کا تحریری جواب مسترد. آئندہ سماعت پر فرد جرم کے لیے طلب کر لیا. جج نے ریمارکس دیے سب کچھ کر لو پھر خود کو عدالتی رحم و کرم پر ڈال دو. یہی رویہ بن گیا ہے. اگر آپ کسی کے محتاج ہیں تو وردی اتار دیں. آڈیو لیکس کیس میں بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس کے بیٹے نجم الثاقب کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نجم الثاقب کی قائمہ کمیٹی طلبی کے سمن معطل کرنے کے حکم میں 1 ماہ کی توسیع کر دی. جسٹس بابر ستار نے کہا سوالات اٹھائے گئے کہ ملک کی کون سی ایجنسی کالز ریکارڈ کرتی ہے؟ وزیراعظم آفس کی ریکارڈنگ کس نے کرائی؟ جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کا جواب چاہیے. تمام فریقین قانون کے مطابق رپورٹ جمع کرائیں یا پھر وفاق کو نوٹس کریں گے. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت 25 ستمبر تک ملتوی. وکیل سلمان صفدر کی جانب سماعت جلد مقرر کرنے کی استدعا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے. ایک پروسیجر کے تحت معاملات چلتے ہیں. آپ سینئر کاؤنسل ہیں، عدالتی طریقہ کار کو جانتے ہیں. فریقین کو 25 ستمبر کے لیے نوٹس جاری. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے بات کروانے سے متعلق کیس. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل سے رپورٹ طلب کر لی. 9 مئی کے جب واقعات ہیں اس وقت عمران خان تو انڈر ڈیٹینشن تھا، تو اس لیے عمران خان کو ان سے کس طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خاص طور پہ پالے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے. اب وہ سارے سلطانی گواہ بننے کو بھی تیار ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کو 9 مئی کے واقعات سے نہیں جوڑا جا سکتا، وہ تو زیر حراست تھے. اب جو سلطانی گواہ بننے کو تیار ہیں وہ وقت کے ساتھ بیانات بدلتے رہتے ہیں. تحریک انصاف کے بانی رکن اور معروف قانون دان حامد خان کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے کہا تھا اداروں سے جھگڑا نہ کریں، مگر اس وقت جو ان کو مشورے دینے والے تھے وہ معاملہ الجھا دیتے تھے. تحریک انصاف کے بغیر انتخابات کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی. الیکشن میں کامیابی کی صورت میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا امکان ہے. اقتصادی صورتحال میں بہتری پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی لا سکتی ہے. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کی امریکی کونسل جنرل سے ملاقات میں گفتگو. کہا سیاسی ایجنڈے سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایسا منشور دیں گے کہ پی ٹی آئی کارکن ہمیں سپورٹ کریں گے. شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کر دی گئی. وکلاء نے درخواست میں موقف اپنایا. شیخ رشید کے خلاف کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی تفتیش جاری ہے. پنجاب پولیس نے بغیر وارنٹ گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر رکھا ہوا ہے. اہل خانہ کی جانب سے رابطے کے باوجود کچھ نہیں بتایا جا رہا. شیخ رشید کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ وہ قانونی حق استعمال کر سکیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 5 روزہ دورے پر آج امریکہ پہنچیں گے. ٹویٹر پیغام میں انوار الحق کاکڑ نے لکھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے پرجوش ہوں. دورے میں ماحولیاتی چیلنجز پر بات چیت، عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی. بین الاقوامی میڈیا اور ٹاپ تھنک ٹینک سے بھی تبادلہ خیال کروں گا. سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کے مفروض ملزم حماد صدیقی کو پاکستان واپس لانے کا کیس طلبی کے باوجود وفاقی سیکرٹری داخلہ آئی جی سندھ اور ہوم سیکرٹری پیش نہ ہوئے. سندھ ہائی کورٹ کا برہمی کا اظہار. جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے 259 افراد جان سے گئے، کسی کو اس کا احساس ہی نہیں. وزارت داخلہ کی کارکردگی بہت ناقص ہے بلکہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں. سماعت 25 ستمبر تک ملتوی. ڈالر کی اسمگلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا اسٹارٹ. انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.05 سستا 295 روپے 90 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 297 روپے میں فروخت. کرنسی ڈیلرز 290 روپے میں ڈالر خرید رہے ہیں. ملک بھر میں بجلی چوروں کی پکڑ دھکڑ، گرفتاری اور جرمانے. پیسکو ریجن میں مزید 111 بجلی چور پکڑے گئے. 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ، 2 کروڑ 59 لاکھ روپے کی ریکوری. بھاول نگر میں 131 بجلی چور دھر لیے گئے. چھانگا مانگا میں نامزد بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر مبینہ تشدد، 1.5 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیا. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. کمبر شہداد کوٹ میں بجلی چوروں کے خلاف 25 مقدمات، 32 نادہندگان گرفتار کر لیے گئے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مہنگائی کے خلاف دھرنوں کا شیڈول جاری کر دیا. آج پشاور میں گورنر ہاؤس کے باہر پہلا پڑاؤ ہوگا. 21 ستمبر کو لاہور، 24 ستمبر کو کوئٹہ اور 6 اکتوبر کو کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت مختصر وقفے کے بعد دوبارہ شروع کر دی گئی ہے. Your brief is CMA 7936. 7936, ma'am. We should keep it before us. Yes, ma'am. Please. And if my lords and your lordships have any questions, they may be raised, may graciously be raised once I have concluded my submission. I'd be very grateful.
My Lords, my first submission, Your Ladyship, my first submission is on maintainability of these petitions. The Speaker. My Lord. The red light is not on. It is, but it's just, I'll just hold it closer. In paragraph number 6, page 3 of volume 1 of my submissions. Page 3, paragraph number 6. Page 3, paragraph 6, volume 1. Lord, I've sought rejection of these petitions on the grounds on maintainability for failing to meet the test criteria laid down under clause 3 of Article 184, which is the matter must be of public importance, first. Second, it must relate to enforcement of fundamental rights. My Lord, my first submission on whether these petitions raise or they raise any issue or question of public importance. My Lord, my learned friends, the counsel for the petitioners, they have largely, their case is rooted in lack of legislative competence, not necessarily objecting to the contents, all of them, but it's essentially rooted in lack of legislative competence of government in terms of Article 191. And the argument, my Lord, is that because the powers and because this Honorable Court in 1980 had made rules, therefore the field stands occupied and in any event could not legislate. My Lord, firstly, insofar as public importance is concerned, my Lord would have now gone through the law and my Lord would see that this law in fact deals with the concentration of powers, barring one provision, but concentration of powers in one office. What this law endeavors to do is, it democratizes this institution, brings more transparency, and structures the discretion, which is something, this structuring of discretion is something which has found favor with this court. The 7 principles enunciated in Amanullah case, 19 PLD 1990, Supreme Court 1092. PLD 1990, Supreme Court 1092. Open policies, open plans, transparency, and so on, which this court has held that it is required of every, and of course it was with regards to the powers that the executive exercises. Now these are all administrative powers we are talking about. This law deals with largely, barring, of course, Section 3 was a question that was raised. I'll address towards the end, and Section 5, which I will address separately. So insofar as public importance is concerned, this law, in fact, deals with the issues which are important for public, which is the litigants. Secondly, insofar as independence of judiciary is concerned, my lords, there is no external element, which is to say that no other institution which has given any role whatsoever under this act insofar as practice and procedure of this court is concerned. It is all confined within this court. And that alone suffices insofar as the lack of any basis to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right, because Article 9, yes, Article 9 as expounded by this court, access to justice and, of course, independence of judiciary is something which is, which every citizen of this country is entitled to.
So my respectful submission insofar as maintainability is concerned, these petitions fail on both counts. In continuum, as far as independence of judiciary is concerned, and I take your lordships to page 6 of this paper book. Starting from Government of India Act 1935, which was the first constitutional order of this country under which federal court rules in 1950 were made. Under Section 214, subsection 1 of Government of India Act, the federal court could make rules but with the prior approval of the Governor General at that time. And in 1950, the Governor General, of course, was neither part of Parliament, there was no constitution, but under the Government of India Act, Governor General wore several hats, and the executive authority vested in him, and of course part of some legislative authority as well. Under the 1956 Constitution, Article 177 read with third schedule, Part 1, Clause 3. The rules were made with the prior approval of the President. There was not even a mention of any law as far as the 1956 Constitution is concerned. 62. Under 1962 Constitution, Section 60, Article 65 said, subject to this Constitution and the law and with the prior approval of the President. In 56 Constitution, rule-making power was contained in third schedule. Yes. Had to be read with article, I forget. 177. That said subject to law and then... No, that said subject to law. It said subject to Act of Parliament. Act of Parliament, but I'll address that, which my Lord has just pointed out. I will address, my Lord, that question. My Lord, as far as... Just bear with me. एक second. I'll just Article 177. I'll read it out just for clarity. Until other provisions are made by an Act of Parliament, third schedule would apply. And as far as 1956 Constitution is concerned, nothing happened under that Constitution, but the Constitution provision was until an Act of Parliament is made with the prior approval of the President. Rules were made. Rules were made under the 56 Constitution, and Act of Parliament was not made. 56 rules came with the prior approval of the President. Is there any so as far as is there any difference between Act of Parliament and law? I'll address that question, my Lord. This is a question that I've noted. I'll address it. Under the 1962 Constitution, Article 65, subject to the Constitution and the laws, Supreme Court could meet with the prior approval of the President. And same position, it was same position under the interim Constitution of 1972, which is Article 193. I'm sorry, my apologies to interrupt, but the question here is surely when Governor General is referred to and the President is referred to, that's the executive branch. The 73 Constitution had the models from going back to 1935 up to 1972. It eschewed the controlling power of the executive branch. So surely the argument there is that the framers of the Constitution expressly were trying to strengthen the independence of the judiciary, and at least, if I may use the term, eliminating one particular branch from the equation. So the argument perhaps is reverse of what you are saying. No, I'm coming to that. I'm coming to that. No, I have it in mind. I have it in mind. When I went through this, I noticed that the executive branch was removed, but not the legislative branch. So this is the effect of 1973. This is what has happened in Article 199. The executive action was. It's a pointer in that of the direction in which constitutional law is traveling. I'll address that. In my Lord, under Article 145, Clause 1, it is subject to law and with the prior approval of the President, and so is the position in Bangladesh under Article 107, identical to what is in India and what we had. With the Constitution, these references, when they say subject to approval of the President, is it unilateral discretion of the President, or it is President advised by the Chief Executive, albeit the Prime Minister, that is? My Lord,
So if we look at the jurisdictions where we have this position, of course in India, he acts on the advice. And if, for example, under Article 191... Government has the last say, not Parliament. Yes. It was, no, my lord, without prior approval. The prior approval of the President means effectively prior approval of the Prime Minister, not the legislature. Yes. You said that in the Indian Constitution also it says subject to law, but that provision doesn't read like that. It's subject to the provisions of the law made by Parliament. Yes. So it's not subject to law. I will come to that when I take you to Article 191. I'll come to that. I'll come to that when I take you to 191. I'm just clarifying जो आपने argument की. My lord. वहाँ ये नहीं लिखा. जी when I'll address subject to law, I'll be addressing. You reproduce. It's 6 and 7, yes, my lord. Now, in other jurisdictions, in United States, for example, this is 28 U.S. Code, Chapter 131, Section 2071. The rules made by the Supreme Court have to be consistent with the acts of Congress. And the latest development, or later development, is the Constitution Reform Act of 2005 of the United Kingdom. Now, under Section 45 of that Act, the President of the U.S. Supreme Court makes the rules, but is required to consult with the Lord Chancellor and all the bar councils while making the rules of procedure. So this is the progression, or this is how this is the system that we have in place. 2000 UK Act, does that 2005? 2005 UK Act, for example, do the rules have to be placed before the Houses of Parliament, or is there any involvement at all by the legislative branch? There is none, but he has to consult. He has to consult. Now, whether with other than the Lord Chancellor, who is a dying breed in the sadly in the UK system, but anyway, it's not. Parliament has made the law despite their rule of sovereign legislative supremacy. The Parliament itself has said it's got to be totally independent of us. Yes, and for that now I take to Article 191. Now this is where I will address what the term law means and what is the scope that this term has, and whether an act of Parliament would be actually covered under the term law or not, or whether we can give it a meaning where an act of Parliament would be excluded from the definition of law and everything else would come under the. Why? I don't even understand this debate. Why is this? What is I couldn't understand the council. What was he saying really? My lord, the council was arguing, began by referring to clause 1 of Article 8, where it said that any law or custom or using having force of law, etc., shall not be made. And then clause 2 said that places a limitation, embargo on the state to not make any law which is inconsistent with the provisions of this, with the chapter. This differentiation between an act of Parliament and law, what is the significance here? My lord, I missed the point. I tried to. In my respectful submission, there would be none as far as Article 191 but you were started by arguing on maintainability. Let's finish your argument. You're now addressing his arguments. Gee, now what I'm on insofar as maintainability is concerned, my lord, my submissions are that this law actually addresses the public concern. It addresses the issue of public importance by bringing in transparency and by structuring the discretion and by democratizing this institution, by and transparency by conferring powers or by, let's say, devolving powers. Both sides agree that a question of public importance is addressed in this. The only question is now whether a fundamental right has been violated, and if a fundamental right has been violated, which fundamental right? Correct. Because question of public importance तो आप भी concede कर रहे हैं या कह रहे हैं कि है इसमें आप
उसको मुख्तलिफ तरीके से पॉइंट कह रहे हैं जी पब्लिक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जिसमें हमने एड्रेस किया है. The other side doesn't agree, but the common denominator is there is a question of public importance. I think my lord is correct. To that extent, you are in agreement. Now, the other limb of the argument, I mean, public importance is, in my opinion, a variable. The other importance is enforcement of fundamental rights. And other than that, I think the general, how the law is developed, a law is sustainable unless otherwise proven. So the burden is on the person who challenges a law to say what has been done. If he's invoked Article 199, his jurisdiction is wider of the high courts. You can attack income tax law or any other law in Pakistan for whatever reason you can, not limited to enforcement of fundamental rights. The attack under 184(3), leaving aside the public importance, I think you both are probably agreement there, is a narrower attack. So the person has to come within attack on a fundamental right. What is the fundamental right that has been violated? Absolutely. Your arguments, what I could understand from is, rather than violating a fundamental right, this is a beneficial legislation for the litigant, not for me, not for the state. Everyone may benefit by it or none may benefit by it, but there's certainly, you're not taking away anything, that you are stopping a right of appeal, giving a right of appeal. Whether that can be done, that's another argument, constitutional plane, but that could be addressed in 184(3) or under 199, it's an argument. I am seeing myself sitting in original. Otherwise, every case will just be filed in the Supreme Court. Don't bother about the High Courts at all. If you read the jurisdiction of 184, can we just read it for my own benefit, because we tend to forget certain words of 184(3). We don't have additional powers, we have lesser powers in the High Courts. Clause 3, my lord. Pura padhe. Ji. One the government wala hai na? Ji. Should I read 1 and 2 as well? Yeah, 3 pad do. 3 pad. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. In other words, which is the said article? 199. So you don't have to go for a public importance matter. You don't have to go for enforcement of fundamental rights. You can still go to the High Court. Here, we don't have extra powers. We have the same powers as the High Court, but we have two restrictions: public importance and enforcement of fundamental rights. Public importance is variable. Let's stick to fundamental rights. So the power here is not a much larger power. My reading of the Constitution, a much narrower power than the High Court. High Court may strike down this law, arguably, and then we can sit in 184 as an appeal. Then we have more powers. I don't know. Am I wrong in my understanding? That's correct, my lord. And my lord, as far as challenge to the vices of this law. Just to add to that, where a law deals with powers of this court, the Supreme Court of Pakistan, do you think it would be appropriate for the High Court to adjudicate upon it? My lord, in another proceedings, this is a submission that I had made in other judgment where a specific question was raised, and my respectful submission at that time was that yes, and I maintain that position. But are you aware there is a judgment of this court which says otherwise? My lord, now I'm before a full court, so I'd just, based on that, I'd just proceed. My lord. I know you pressed for time. Attorney General, can you explain the word enforcement? It's not the infringement of the fundamental right. It's the enforcement of the fundamental right. So, public importance with reference to the enforcement. With reference to the enforcement. Here, fundamental public importance, fine. Both parties are there. Now, had it been infringement,
then you were right that there has to be a right which was infringed. Here, it's more wider. It's enforcement. They are saying that this is a matter which relates to access to justice. So it's an enforcement of that particular right that they're talking about. They're not saying that it's an infringement of the fundamental right. Can you explain? Can you expound on that? My Lord. Now, of course, as I said, my Lord, I reiterate that yes, access to justice is a right recognized by this court covered under Article 9, and to an extent, yes, it would be a fundamental right. Now, what they had to show was, the burden is on them, while challenging the constitutionality of this act on the basis of lack of enforcement of fundamental right, as my Lord has just pointed out, not infringement of right. What they have to show is that this law does not, in fact, enforce this right of access to justice. No. It's first we are at the threshold of the maintainability. We don't go into whether this law is right, whether it is wrong, whether it is enforcement of the fundamental right or it is an infringement. As far as maintainability is concerned, public importance is done. Then we come to this issue of, does the petition that they have filed, does the petition talk about enforcement of the fundamental right or not? The petitioner, my Lord, proceeds on the basis that by way of this act, powers conferred upon the Chief Justice under the Supreme Court rules have been curtailed or taken away, and that then results in this law being unconstitutional. It is not the case here that this act in any way prevents enforcement of any right. Attorney General, one way of looking at it is the enforcement part, that whatever act has been challenged impedes the actualization of the fundamental rights. So perhaps it's interchangeably talking about infringement, but however uses a different word. So if a citizen comes and says this particular act thwarts or impairs the actualization of my fundamental right, I'm coming to the court. So enforcement or infringement might be synonymous. One more thing, I think the question of public importance also is a threshold entry point. Suppose if we see, don't you think the petitioner will have to show that in order for it to be a question of public importance, there must be apparently that law must be against public interest. But suppose if it's clearly in favor of public interest, does it constitute a question of public interest? To become a question of public interest, it must apparently prima facie be something against public interest, and then you say, yes, it's a question. But if it's so obvious that the whole law is in public interest, for example, do you think there's a threshold to that effect, or there isn't any? My first part of my submission, my Lord, was that the question of public importance, my Lord, when I pointed out that what this law does is it democratizes this institution, brings more transparency, structures the discretion, it actually advances that public interest. And therefore, they fail on that threshold, that count as well. My Lord. On my repeated questions, in response to my repeated questions, they conceded very explicitly that this is a good law. It enhances access to justice, and also, speaking for myself, it addresses a very, very big issue of internal and institutional independence. Now, in that context, when this is an admitted fact, the only question whether the Parliament had the competence or not, क्या जो 184(3) की requirements हैं, वो fulfill होती हैं? Because there is no enforcement of fundamental. Lord, if that is so, then these petitions have to be rejected on this basis alone, because insofar as legislative competence is concerned, 184(3) cannot be pressed into service. If we'll let you, I think a lot of questions are coming up. We'll note. I'll try to make a point. These are, my Lord, please. अगर आप थोड़ा सा अपना continue रखें, I want to know where you're going. Okay. Attorney General, if I may ask you a question, is the public interest that Parliament, or for that matter a provincial assembly, remains within the limitations that may be placed by the Constitution on Parliament or a provincial assembly? Is it in the public interest
My lord, which fundamental right would it be affected? Not talking fundamental right. I'm talking of public interest. Of course. Of course. Yes. So therefore, if a law... Again, happening, which I must, interject. I would, you have agreed with now here, I won't agree with you. I will say it may be unconstitutional, but not within the parameters of 184.3. There may be a lot of unconstitutional things going on in Pakistan, but it won't come within the parameters of 184.3. That is the fundamental point. That's my way of approaching it. Others have different ways of approaching it. So I think after chalne fir aap note kar le sawal. I just this part I just conclude. If I may continue, sorry. If I may continue. It is in the public interest. I'm not speaking of any fundamental right. I'm only speaking of public interest. It is in the public interest you accept, and I think rightly so, that because you have a federal structure, Parliament and provincial assemblies must remain within constitutional limits, right? Whatever those constitutional limits are. So therefore it seems to me to follow logically that if Parliament makes a law that is ultra vires, or a provincial assembly makes a law that is ultra vires, it is in the public interest to challenge that law. Because if remaining within the constitutional limits is in the public interest, then going beyond those limits and making an ultra vires is surely a breach of public interest. What would you say to that? That touches upon the legislative competence. No, I'm talking of public interest. Yes, but any law, a law cannot be struck down on the basis of just public. Where the challenge can be is a separate. My lord, let's just take a step back. Any law made by any legislature, provincial assemblies or the Parliament, would be a matter of public interest and importance. It is a law being enacted. Now, in order to examine that law, in order to assume jurisdiction to examine that law, we have to look at, in the case of Supreme Court, Article 184, and the cases of High Court in 199. नहीं, now, आप तो कह रहे हैं ना, मैंने जो नोट किया, हो सकता है मैंने फिर गलत नोट किया हो, आप तो कह रहे हैं कि this challenge fails on both counts. Yes. Public interest and this. जी. तो मैं अभी सिर्फ public interest पे देख रहा हूँ ना. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, I mean, speaking for myself, it seems to me that any law which is ultra vires, whether by Parliament, whether by provincial assembly, meaning breaches the limitations, whatever they may be, imposed by the Constitution, because the Constitution is supreme. It is contrary to public interest. Has to be. Now, let me just quickly address this, because this is a maintainability issue here, and I want to address that issue here first and foremost. The two conditions provided under Clause 3 or required under Clause 3 are connected. It has to be a matter of public importance with reference to enforcement of fundamental rights. Now, independently, any legislation, any statute, any rule or any regulation would be a matter of public importance or public interest for that matter. Now, in order for this court to assume jurisdiction, now this court does not assume jurisdiction under 184.3 on a legislature, on any law being enacted for want of legislative competence. It has to be ultra vires or violative of the rights, fundamental rights granted. So you say that the word relating to enforcement, with reference to the enforcement of that you say is the buckle that connects the two things. That is the buckle that connects the two, and that is where it actually prevents, if I may say so, this court examine constitutionality of a statute on legislative competence. Is legislative competence not in the public interest? As I said, Your Ladyship, this is something, legislative competence alone is something which can only be examined under 190. Is it not a right that everyone has under the Constitution that laws are made in a particular way? Legislative competence, of course, as I understand it, what you have to see in the act is an act of Parliament, whether Article 70 read with the list permitted it or not, or whether there is a provision of the Constitution which directly confers that power upon the Parliament, whether that provision permits it or not. And if those provisions do not permit that legislature to legislate on that particular matter, then yes, this is a legislative competence issue, and it is not permissible under 184. In your opinion, the law is good law, Parliament is competent to make the law, and every provision of the law is valid and does not in any way violate any provision of the Constitution.
So then what happens again? I go back to the full court hearing aid, and you are given a right of appeal under that. So are they not then entitled to their right of appeal in the event that the court decides that these petitions are not maintainable? They cannot challenge it? Does that not go to the fact that once again you've put the burden on the court itself to decide when it wants to constitute a full court and block that right of appeal, and when it wants to constitute a smaller bench and allow that right of appeal? And whether the act is in field or is it suspended? I think my justice colleague has raised a very valid point, and I was thinking about it during the break. And if we read the right of appeal, first of all, it talks about an aggrieved person. Now, I'm trying to envisage a scenario where one would be aggrieved. First scenario. Second thing is, we can, and this is permissible, read down legislation. We can, for instance, read into it that wherever there is a full court, needless to say, you cannot have a right of appeal over the full court. So that one can read down the legislation that those cases. But which right have we determined? What have we taken away from someone? Someone gets an extra right to challenge a judgment, if at all, it's an irritation to us. Oh, now you have to have the appeal. Oh, now the review jurisdiction has been extended. So, what are we doing? And it's not conferring this power to an executive functionary, to the legislature, to the president, or to anybody else. It may be nuisance value for us. Our reviews are going, our appeals are going, that sort of thing. What are we taking away? If the judgment is correct and in order, should we shy away from looking at it because someone files an appeal? Yes, it may bring in litigation into the court. That's the downside, may be said. But where is the aggrieved person? Who will be the aggrieved person be? The person affected. Because I think the 184.3, the whole intendment of that was for not for lawyers. It was not for the well-to-do. It was not for the multinationals. It was for the poor, the dejected of society. We have a whole chapter on the principles of policy, which no one bothers to, we don't read. Bonded laborers, transgender, women rights, children, they can't come to court. We can intervene, 183 can come to their rescue. So I was looking at things in that perspective. We have to see the whole entire constitution as a whole. We just stuck with one provision that somebody says, hey, please tell me how you aggrieved. I kept asking him, are you aggrieved? He says, no. They couldn't do it, you can do it. That's about the argument that I've understood so far. That's a valid argument on its own. Yes, to be addressed, for instance, the income tax ordinance has certain have been challenged before the High Court. Could we entertain it at 184.3? After all, it is legislation. After all, it's a public interest. After all, it's a taxation matter. It will meet all the tests of public interest. But it is not, because taxation is not a fundamental right. You can't tax or not tax or whatever. Nobody can say my right not to be taxed has been infringed. So go through the High Court route, get a 191 petition, come to the Supreme Court in 184. That is the appellate jurisdiction. So we should read the Constitution and not just pick the words. We are just stuck with these words, two words also. Who's harmed by this? The only thing is you've taken away our power, you've taken away specifically the power of the Chief Justice. That's one irritant. You've given a right. That's another irritant. You have created another same lawyer. Okay, this person wants to waste money on another lawyer, do so. So his power will be lighter. What is it to us? Mr. If I may stop, take you back to what you were saying about, and I understand your point relating to the buckle part of it. So here we have a law which relates to the practice and procedure of the court, and that is, you say you accept that any law which is ultra is against the public interest, but you say the buckle is missing because it's not just legislative competence alone, but it has to relate to fundamental rights. So I was just wondering. If I may rephrase it before my Lord formulates the question. Legislative competence cannot be interfered with here. No, I'm just saying, I understand that. So he may care on. Yes. But breach of legislative competence is contrary to the public interest. Until it is related to fundamental right, 184.3 cannot be invoked. This is your argument.
So I was just wondering that the subject matter of this law essentially is the practice and procedure of the Supreme Court. Article 10A relates to due process. So surely any law relating to the practice and procedure of any court, but let's take the Supreme Court, which is ultra vires, surely that affects due process and therefore is directly relatable to a fundamental right. What would you say to that? And that is where, when passing this threshold, of course, when a petition comes before your lordship, so before this court under 184(3), these are the two things which are to be examined at first instance. Now, once this threshold is met, then, and the burden is just discharged. Article 10A. It helps sometimes to refresh our memories. For the determination of his civil rights. Of his civil right, not the Supreme Court civil rights. Aage padhe. And obligations, or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. It's nothing to do with the Supreme Court's due process. It's his. Have your right of appeal been taken away? Have your right of cross-examination been taken away? Have your right of a statement under 340 been taken away? So that's where then it takes me, my lord, and I was just addressing your question. Attorney General, the subject matter is legislative competence in relation to practice and procedure. Surely as a matter of principle, it's not a question of whether the law is taking away. It is this due process in and of itself? And if the law is ultra vires, the answer is precisely because ultra vires, it can't be due process. So let's proceeding on this. Whatever it says, whether it says I'll go with it. Chief Justice is master of the roster or five. I'll go with it, and let me just make my submission on this. I'll go with it. When somebody brings in, and let's assume, for the sake of argument, let's assume, and for a moment, if it is assumed that yes, it is a matter with reference to fundamental rights as well, then what has to be shown in the first instance that this legislation fails to enforce or infringes any of the fundamental rights that the citizens may have. Well, if due process is interfered with, surely they have not shown anything to say that there is any due process which they are entitled to under the existing scheme or the scheme as it stood prior to this act. We made questions. You can continue. I think we have our own views and opinions. Aap chale aage. Now you have to persuade us, not we have to persuade you. Just one question I was just thinking about it. Suppose a provincial assembly or even the parliament tomorrow makes a law saying after an appeal has been dismissed under Article 185, another appeal would be available to the litigant before a larger bench. Would that law stand? I would rather consider these competence ki baat let's consider law did. Maybe tomorrow that very matter comes before us. So the question is a second appeal. My lord's question is whether the second appeal would be provided. Not at all. I am questioning the competence. The appeal in the Supreme Court under 185 is provided by the Constitution. Can another appeal, which is not specifically provided in the Constitution, be provided by ordinary legislation? The example I gave you was an extreme example. The first question is, can by ordinary legislation an appeal be provided where the Constitution specifically does not against orders passed by the Supreme Court? I will add to this question. Is there any provision in the Constitution preventing जो वो टेस्ट है कि जी वो आइटम 55 का कि जी वो हमने तो इनलार्ज किया, पहले एक अपील थी अब हमने दूसरी कर दी है, तो इसलिए ये हमारी कॉम्पिटेंस में है. Would that argument stand? Noted, my lord. आप बाद में जवाब दे दें तो आगे ऐड कर रहा हूँ उसमें दूसरी तरीके से. Is there any provision in the Constitution preventing the Parliament from doing so? Noted, my lord.
Now, my Lord, if my Lord may kindly turn to Article 191. Let's go to Article 191. It has been read out. I'll just read the first part of it, where it says, subject to the Constitution and the law. Mr. Attorney General, please you read just the preamble of this Act and Section 3. Yes. Yes, my Lord, it has been read out. Talks about Article 10A. Article? 10A. Yes, it does. Specifically. And Article 4, Article 25. My Lord. And subsequently in Section 3, specifically talks about 184.3. My Lord. How this can be proceeded under Article 199 when specifically it is challenging the mandate of the Supreme Court as per Section 3 of this Act. My Lord. How that can be moved before the Supreme High Court under Article 199 of the Constitution? My Lord, I noted. My Lord, now the question that has come before your Lordship is whether this Act, 2023 Act, is covered under the definition of law, howsoever expansive definition, howsoever expansively the term law is defined. My Lord, Article 260 has two definitions. One is of an Act of Parliament and the other is of a federal law. Here we are dealing with the federal law. Article 260 defines the federal law. It says... You say over here law includes statute law. Yes. Yes. In my respectful submission, law can only have one meaning as far as this provision is concerned. But even if it is given an expansive meaning, this Act would surely be covered under the definition of law. If it's to be covered, then why didn't the Constitution say by an Act of Parliament? Why did it use the word law? These words are not interchangeable. They are used in a very specific sense in different articles. And so you have to, the interpretation has to be given to the word law and not to just say just because law includes legislation, so here it will be legislation alone. Law has a meaning, and if the Constitution wanted to say it just by an Act of Parliament, it would have used those words. Your Ladyship, when we look at the provisions from where the Parliament draws its legislative... Why did you look at 75.3? जी 75.3 and 141 and 142 as well. पढ़ लेते हैं जरा उसमें दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो गए. When the President has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of Majlis-e-Shura. हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ. देखते रहिए 𝐴𝑅 न्यूज़. क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे. ये सब डैमेज की निशानी है. इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर. इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे. इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं. मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये मेरे बाल हैं. आई लव इट. डव इंटेंस रिपेयर. डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से. कहीं बोटियों से फाइट है, कहीं हेल्दी डाइट है, कभी कोफ्ते की डिलाइट है, तो कहीं कोरमे की साइट है. But don't worry, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है. क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले. कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा. Ready, steady, go! केक जिसमें है मजेदार क्रीमी मिल्की फिलिंग, अंडे, दूध, गंदम की ग़िज़ायत और इजाफी कैल्शियम भी. रेडी टेडी ग्लूको. सेफ गार्ड करें हम, जर्म से दूर रहे हम. शप भागे जर्म्स. याद रखना, सिर्फ सेफ गार्ड से शप. सेफ गार्ड से जो नहाए, घर तो जर्म से बचता जाए.
शप 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 चलता जाए, सेफगार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। मेरी पूरी फैमिली के कपड़े धुलते हैं सिर्फ प्रियो से, इसीलिए तो मैं कहती हूँ लाइफ के हर ओ के लिए प्रियो। मास्टर रॉयल मैट इमल्शन, जो देता है आपकी दीवारों को रॉयल ट्रीटमेंट। मास्टर रॉयल मैट इमल्शन, दाग ठहरने ही न दे। चाय चाहिए कौन सी चना, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। कैसे जापानीज पेंट की जगह कोई भी लग जाए। अजी ये देखो, आज ये आदमी हमारे घर में कोई भी पेंट लगा रहा है। निपॉन के मामले में लोग जज्बाती हो जाते हैं, ध्यान रखा करें। निपॉन पेंट, एशिया's #1 पेंट ब्रांड। These headline news are brought to you by Dove Intense Repair, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करें। Dove Intense Repair। ऊपर वाले को हिसाब देना है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूंगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ। बराए करम अगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बताएं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में गलत क्या है? कानून अच्छा बना है या नहीं? हम पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करेंगे। आइन पर जजमेंट्स हावी नहीं होते। सबसे पहले हम अल्लाह को जवाब दें, फिर किसी और को। चीफ जस्टिस काजी 𝐂𝐨𝐯 के फुल कोर्ट समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील को मुखातिब करके कहा, चीफ जस्टिस के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं तो मैं जानूं और पार्लियामेंट जाने। कानून को उड़ा देंगे तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा। क्या आप चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर एहतसाब से बाला बनाना चाहते हैं? रेकॉर्डेड केस में मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हम कहें चीफ जस्टिस की जात को नुकसान न पहुंचे। मैं आइन और कानून के ताबे हूँ। मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे, मैं इन जजमेंट के ताबे नहीं हूँ। मुल्क की तारीख में पहली बार कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात एक जगह पर थे। ये कानून इख्तियारात को जमहूरी शक्ल देना चाहता है, अदलिया को मजीद जमहूरी इक़्तिदार का हामिल बनाता है। अटॉर्नी जनरल का 1950, 56 और 1960 के रूल्स और कवानीन का हवाला। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लॉ में क्या फर्क है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मेरी मालूमात के मुताबिक कोई फर्क नहीं है। Can Parliament make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court? That rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. क्या ऐसा कानून बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं थी? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है? फुल कोर्ट समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात। कहा, पार्लियामेंट कौन होती है जो कहे 3 मेंबर कमेटी बनेगी, 5 मेंबर क्यों नहीं? कल पार्लियामेंट बोले फैमिली मैटर्स पर 5 रुकनी बेंच सुनेगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या फुल कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने को कबूल किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का खुद को रेगुलेट करना उसका बुनियादी हक है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, सवाल यह है कि आइन के तहत हमारे रूल्स बनाने के इख्तियारात क्या हैं? क्या पार्लियामेंट कानून साजी और रूल्स को ओवरराइड या उनमें तरमीम कर सकती है?
دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا روسٹر ہے. جب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں, کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے. کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی. انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی. انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجیے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی چیف جسٹس ماسٹر آف دی روسٹر نہیں ہوتا. چیف جسٹس کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کو نتھی نہ کریں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے تو عدلیہ کی آزادی بڑھ گئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس. کہا یہی رول سپریم کورٹ بنائے تو درست, پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا تو غلط. جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ تمام اختیارات ایک شخص کو دینے کی حامی ہیں. ایک شخص بینچز بنائے اور اس طرح فیصلوں پر اثر انداز ہو. کیا آپ یہی روایتی طریقہ چاہتے ہیں؟ شاید یہی غلطی پارلیمنٹ درست کرنا چاہتی تھی. پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ ہمارے فیصلوں کو غیر مؤثر بنا دے. عدالت اور سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے, مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. تو برائے کرم آپ ایسا ان سے سلوک کیجیے جیسے کہ ایک میزبان مہمان سے کرتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ پہنچنے پر استقبال. گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا. پولیس کو اپنی ذمہ داری دل جمعی سے ادا کرنے کی ہدایت. سپریم کورٹ کے عملے سے کہا عدالت لوگ خوشی سے نہیں اپنے مسائل لے کر آتے ہیں. سائلین سے ایسا سلوک رکھیں جیسا ایک میزبان اپنے مہمان سے کرتا ہے. چیف جسٹس کا پروٹوکول لینے سے بھی گریز. ذاتی گاڑی میں عدالت پہنچے. چیف الیکشن کمشنر سے درخواست ہے انتخابات کی تاریخ میں نواز شریف کی واپسی کا ہمارا پرانا مطالبہ ہے. پیپلز پارٹی کو دیوار سے نہیں لگایا جا رہا. بلاول بھٹو کہتے ہیں سی ای سی اجلاس میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اعتراضات تھے. سابق صدر زرداری سے درخواست ہے میرے ہاتھ نہ باندھے جائیں. ایسا نہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بند کرنے سے ملک کی مسائل حل ہو گئے. ایک طرف معاشی اور سیاسی بحران ہے, دوسری طرف لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی کی صورت میں چیلنجز کا سامنا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے. براہ راست لیے چلیں گے. The US Supreme Court taken away as egregiously wrong by in Dobbs versus some other 2022. I think surely that is settled constitutional law. My lord, Mr. please, if you don't mind, I have to take your lordship to now. Please proceed further. I mean, we will write a judgment, whatever we want to write. Now, my lord, I will. My learned colleague will be recording the questions, noting down the questions, and I'll respond. One thing, how I understand this. This is not my statement. Rahman knows shorthand. This is not my statement. This is my understanding. The Act of Parliament can be considered as law as well. But every law cannot be considered as act of the parliament. جیسے کہ آپ مثال لیتے ہیں, landlord can be landlord, but owner can be treated as owner as well as landlord. تو اس طریقے سے یہ جو legislation ہے تو پارلیمنٹ کرتی ہے, اس کو آپ law بھی کہہ سکتے ہیں, ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ججمنٹ یا کیس لاس سے آتے ہیں یا کسٹمری لا ہوتے ہیں, اس کو آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے اس کو کنفائن کیا گیا, لا کیا کہہ بھی نہیں سکتے مائی لارڈ. اور دوسرا ایک اور لیٹس لک ایٹ اٹ فرام another aspect. Now 1980 is when these rules were made. And when these rules were made, if I draw your attention to Order 11. Order 11 کو ذرا دیکھیں. اگر ہم بہت ہی پیڈانٹک اپروچ لے لیں, Order 11 مان لو. یہ پیڈانٹک اپروچ لے لیں, یہ کس نے بنائے؟ کس نے بنائے؟ سپریم کورٹ نے. کب؟ 1980. سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے؟ نہیں, hang on. If you go into that approach, سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے بتائیے؟ All the chief justice and the judges sitting at home. No, where? No, but if you're going to go that route, then you can even say these are what is they say Supreme Court can make, not administrative meeting of the judges of the Supreme Court. Where does the Constitution provide for an administrative meeting of the judges of the court? So we don't want to just destroy the entire system of governance. So did we sit in a court of law? Did we pass a judgment? How did these rules get enacted? Did people have a say in the matter? Or 10, 15, 17
people, then all gentlemen got together in a closed room and say, here, where is the concept of an administrative thing? That administrative concept itself is created by the rules. So it surely cannot supplant the Constitution itself. It says the Supreme Court. It's very clear. Now, I'm not really understanding. I am only concerned with one and only one thing. What have we taken away from ख्वाजा साहब, his client, or any citizen of Pakistan? What have we taken away? What have you taken away? If you've taken away something, we will strike it down. I mean, I don't know why we are having this academic discussion. I really don't understand the point. My Lord, if I may. Now, there is this provision under this law, and Section 7, for example, application for fixation of urgent matters. Do we not know that there are people who died in prisons, condemned to death, before their appeals came up for hearing? This is our domestic affair. No, with great respect, my Lord, it is not. It is. Absolutely not, my Lord, with great respect. This is the right of the citizen, litigants ka right hai. Learned Attorney General. My Lord, with great respect, it is not. Resolve this. It can't possibly. Learned Attorney General, what if the Chief Justice refuses to call a meeting of the full court and refuses the full court to amend the rules? Should the Parliament not intervene in the interest of the litigants? That is exactly what has happened. And here, if my Lord may kindly turn to Order 11 of the Supreme Court rules. Order 11 of the Supreme Court rules. I'm just going to take this point forward. Order 11 of the Supreme Court rules. It begins by saying, save as otherwise provided by law. The full court, going by, let's say... एक मैं आपको इसमें तसादुम दिखा दूं अब मौजूदा रूल्स में जो आइन से तसादुम रखती है, ठीक है? अपील इज अ राइट. Civil petition for leave to appeal is not a right. For an appeal, the rules provide 30 days, which is a right. For a civil petition for a leave to appeal, you get lots of time, 60 days. I would say it violates the very concept of the Constitution. Maybe it's a mistake. But the other question would be, can these rules be challenged? I think they can be challenged. If they had a supra-constitutional effect, they can't be challenged. Suppose tomorrow I refuse to fix any bench. What will compel me? At the moment there is stay order of provision, I said, nahin, hum chutti pe jaate hain. Hum court hi nahi lagate hain. What will you do? Move a reference against me, that's about all. You can't compel me under any law to do that. So, the object is, there has been a problem, there has been successive addition of cases. We are completely closing our eyes to it. हम 2019 में full court meeting हुई थी. वो भी हम नहीं कॉल कर सकते हैं, वो भी इख्तियार चीफ जस्टिस का है. 2019 से 4 साल गुजर गए हैं, क्यों नहीं मीटिंग कॉल हो रही है? 2019 से उस जमाने में 40,000 केसेस थे, अब उसमें ऐड हो गए 27,000. हमारी मर्जी, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है? नहीं, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है, पर हम तनख्वाह नहीं लें स्टेट से. हम टैक्स पेयर हमें पैसे देता है, हमें एक काम के लिए पैसे देता है, केस का फैसला करो. ये हमारा काम है और कोई काम नहीं है, बाकी सारे हमारे पेरिफेरल काम है. तो ये आप इतने आप उस मेन पॉइंट पे आप नहीं रह रहे हैं, आप भी खिसक रहे हैं उधर, वो भी मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं. माय लॉर्ड, आई जस्ट जो आप पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस का, इसको पढ़े ना, ये सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ. जी, सो तो कोई लॉ था नहीं जी, उस वक्त नहीं था. रिकग्निशन ठीक है, लॉ प्रोवाइड कर सकता है कुछ नहीं. आपसे ये अभी देखिए, उस वक्त लॉ नहीं था. अब ये लॉ, क्या ये आपके ख्याल में ये जो 1980 के रूल्स हैं, ये लॉ है? these are आपसे सिंपल, आर द 1980 रूल्स लॉ, कम विद इन द पर्व्यू ऑफ लॉ? 191 की डेफिनेशन क्या? 191. No, sir. No. These are the rules. These are the rules. The language says subject to the and the law, the Supreme Court will make rules. What is the purpose of mentioning save as otherwise provided by law? Yes. This is the recognition of what Article 191 provided. Now, at that time, there was no statute or an act of parliament which provided for anything, but the full court of this court left it open. Now the law has been promulgated, and this covers under this provision. Yes, not just this provision, it is covered under 191. This only recognizes what 191 already. Mr. Attorney General, then you are excluding all those laws which are made under the delegated powers. You are excluding all those laws which are made under the delegation of the power by the government or the parliament.
Delegated legislation. In what context, my lord? In the context of definition of law. There are two primary law and the delegated law. And delegated law includes the rules. No, we are looking at the Supreme Court rules are not law. We are only looking at the language of 191. We are looking at the language of 199, and we are trying to understand what is the term or what is the scope of term law as provided under 191 is. Yes. Now, I had taken your lordship through how this provision or the pari materia provision had historically progressed, where in addition to Parliament there was a executive as well. That role was taken away, that role was eliminated, but the role of Parliament remained. And, my lords, Article 67, which provides for the regulation of the rules of procedure of the houses, there is no such You have not argued on Article 142 because this is the distribution of legislative power. Yes. And Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Yes. And if we go through Article 50, the legislative list of item 57, it is also related to 58. 58. Yeah. उसके साथ 55, yes, it is, and yes. power of all courts. So insofar as Section 5 is concerned, it is entry 55. With respect to other provisions, it is Article 191 read with entry 58. Article 50, Why is it not coming under 55? It says enlargement of the jurisdiction of the Supreme That's Court what I said, sir. and the conferring up thereon of supplemental powers. So it has given us more powers. I have committed a mistake. I've given you an exact example of a Himalayan mistake committed by this court, the recording just 6.5 billion. Isn't that a big enough mistake for us to understand? That's exactly what I've submitted. Section 5 is covered under entry 55. So you are trying to resolve that. Why? I don't know. I mean, they don't argue the case. Now, you are not, please don't take questions. You just hear them, write them down, whatever. Now, my lord, I just stick to the submission that I had made in the beginning. Mr. Amir Rahman is the person who is recording the question. जब आप देखें, हम आज से सुबह से कोई 150 cases की addition हो गई होगी because of this case. We can hear this case for the next month. No other work will happen in the Supreme Court. If you want this system to collapse, please proceed. Take your time. We won't interrupt. ख्वाजा साहब नाराज हो कहते हैं, अब आप नाराज हो जाएंगे, मुझे बोलने दे रहे हैं. पॉइंट्स ले हम नोट करेंगे. हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं. आपने इतनी मोटी चीजें दी, हम पढ़ लेंगे इनको. Now I just quickly rush through my submissions and my that in Order 11, the use of the word law, the term law, you think it carries the same meaning as in Article 191? Yes. Thank you. Now, my lord, if leaving this act out of Article 191 would render part of Article 191 redundant, where it says subject to law. And redundancy cannot be attributed lightly to a statute, let alone a constitutional provision. The judgments are in the paper book. My lord, there was another submission which was made with regards to field being occupied, which is to say that since the rules had been made, therefore the field stood occupied and therefore a law cannot be made. Now, that principle also does not apply because that principle is only applicable where the powers are coextensive or coterminous. Here, the Constitution specifically says that the rules shall be subject to the Constitution and the law. It can't be. So therefore, the principle of the doctrine of occupied field does not get attracted here. Now, my lord, if I may take your lordships to the individual provisions of the statute before I conclude my submissions. Section 2, my lord. Section 2, as I've already submitted, it endeavors to create more transparency, where the power has been, which was under the rules vested in the Chief Justice, has now been... Call it a sharing of the burden. Sharing of the burden. It's a huge burden. Yes. Why think of it negatively? Think of it positively. My lord, I don't want this burden. I want to share it with my colleagues. So what?
Fantastic, my lord. That ends the matter as far as Section 2 is concerned. Absolutely. And because what it does is... I don't trust them. That's the only other way. I can't trust them. It is in this time when we want the justice system to be more efficient. It actually helps. There are more minds sitting together trying to work out how to make things more efficient and transparent in order to aid the litigants who come before your lordships. And if I may say so, the primary duty and obligation of this court is under Article 185, exercising appellate jurisdiction. 184.3 is rare cases which come before you under 184.3. It is actually the appellate jurisdiction of this court which this court is duty bound to exercise. So anything and everything which advances that objective, that constitutional objective, must be supported, must be upheld. There is no fundamental right which gets offended or violated by advancing this objective. And Section 2 endeavors to do as much. So if that was the objective, the law would again be changed if at some stage the government or the parliament decides that no, 3 judges are not enough, let's do it by ballot. So you would amend the law accordingly? My lord, if I may. Or let's do it, why 3 judges, why not all 17 sitting and deciding which cases go where? My lord, if I may respond to this? Yes, sure. My lord, if the pendency is down to 20,000, absolutely there would be no occasion. But if it goes to 75,000, there might be. Why not 10? 0. But this is what is being sought to be addressed. You will attend to a matter on that thing. I don't think parliamentarians, we should disparage Parliament all the time. If the situation is that there's no pendency, maybe they would have not come up with this thing. Maybe if the damage caused by various was not done, they would have not come up with this thing. So Parliament doesn't operate in a vacuum. It hears, the government is part of it, opposition is part of it, all these people are part of it. They think and they produce something. Maybe not in the most perfect of things, but we have to, each legislation must be supported unless it's clear-cut violation of the ultra-vires of Constitution fundamental rights in 184.3. Otherwise, it can be ultra-vires of Constitution 199. And my lord, the power remains vested in this court. But Mr. Attorney General, suppose there is a parliament that is elected in the next general election. On your theory, would that parliament not have the power to repeal this law? Of course. Oh, you see, you are saying this is a law affecting. If it repeals it, yes. That this is a law affecting, having such a salutary effect. It is having this, that, and the other. So someone can say, "जी parliament का तो power ही नहीं है, तो ये law को repeal कर दें." या फर्ज करें अगली पार्लियामेंट आती है वो सेक्शन 2 को फारिग कर देती है, वो कहती है जी चीफ जस्टिस का पावर है वो, दैट्स गुड इनफ। माय लॉर्ड सकती है, आपसे पूछ रहा हूँ। जी देखिए अवान साहब मैं देखें प्लीज, मैं उनको भी रोका था और मैं आपको भी रोकूंगा। मैं कंजूस पे नहीं जाऊंगा, मैं रियलिटी पे जाऊंगा। ये कानून आ गया, अब अगली दफा कोई केस ले आएगा हम वो वाला भी देख लेंगे। मैं ओपिनियंस कभी नहीं दूंगा। आप हमारे या तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कीजिए, हम ऐसे आपको ओपिनियंस नहीं देंगे। आपका काम है अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट को ओपिनियन देना, हमारा काम है उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी आप देखें, खत्म। हम आपके ऊपर मफरूजे नहीं डालना चाहते हैं कि क्या होगा, भाई हमें क्या पता क्या होगा, जब आएगा हम देख लेंगे। बहुत सारी चीजें आप कर लें प्लीज इस कानून पे और आगे बढ़ा लें बात को, क्योंकि हम देखिए कोर्ट आप समझ नहीं रहे हैं इसकी अहमियत। हम लोग बैठ के इधर एक कंडीशन गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं, लोग कोई जेल में मर रहा है, किसी का केस है, मेरी तो मुझे तकलीफ हो रही है। सुबह से 57,000 है, अब हम छोड़ के जाएंगे 150 और बढ़ जाएंगे, कल 150 और बढ़, आप चला लें 1 महीना केस, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं इस गरीब अवाम से एक काम करने के लिए कि उनके केसेस का फैसला कर लें, खत्म। ये बहुत अच्छी डिबेट है, जाके हाई कोर्ट में कर लें चैलेंज, वो आ जाएगा जजमेंट नंबर 94 में, हम बड़े पूरे पावर्स के साथ बैठ के इसको देख लेंगे। आपको पता है आज बेंच बनाने का क्या इशू था, इसके बावजूद के स्टे चल रहा है। मैंने अपने 2 सीनियर कलीग से पूछा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, 2 स्टे चल रहा है। अलग बात है आइन कानून पर स्टे चल रहा है, फिर भी
कि बात को आगे बढ़ा के किसी खत्म कर लेना, सराह लें कानून को, ये तर्क कर दें, मगर आप अपने दलाइल दें, हम उसका सुन लेंगे और फैसला कर लेंगे। कोई इख्तिलाफ करेगा, कोई नहीं करेगा, उनकी मर्जी है। हमें आपको परसुएट करने की कोई जरूरत नहीं, आप हमें परसुएट कर लीजिए, और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, हम आपके खिलाफ कर लेंगे फैसला। My lord, my learned friend is question. No, sorry. I'm not indulging in conjectures. My lord, I'm asking you a question in order to understand the principles that you are saying and arguing and submitting before the court. My lord. I'm not engaging in theoretical argument. My lord. I'm trying to understand the basis on which you are defending the constitutionality of this law. So therefore my question stands. Tomorrow, if Parliament were to make this a law and say, let it go back to the Chief Justice in his sole capacity, that is within Parliament's competence? My lord, if that is so, if it so happens. Yes, not conjecture. This is to establish the principle. You accept that? Absolutely, my lord. Absolutely. It is in Parliament's competence, and if I may say so, my lord. My lord, I have provided assistance. I have, as Attorney General. Absolutely. Yes. Okay. Mr. AG, to your right. Section 2, it provided that the bench, constitution of the bench. Suppose bench is constituted. Who will assign the cases to the benches? Still, this power has not been given in this act. Again, there will be. My lord, the committee determine its procedure, and then it. With regards to how the meetings are to be in this committee itself. Who will assign the cases that this case will be fixed before this bench? And one thing more, if two members, senior members, comes to the conclusion, say tomorrow the Chief Justice will sit in Quetta Registry for 1 month, for 6 months, or for 1 year. Is it possible? My lord, what would we do if this situation occurs? My lord, the committee has to, under subsection 2, after the commencement of this act, the committee had to hold its first meeting for the purposes of determining its procedure, which would have included when and how the meetings were to be held, and the constitution of benches, etc. But that never happened, because the law was suspended, or well, the bill was suspended before it became an act, which was also, if I may say so, with regret, was a first. My lord, this is exactly what under subsection 2 the committee is to do. As the first. We will regulate through rules. They will regulate this act through rules. My lord, the committee will determine its procedure much the way the Supreme Judicial Council's procedure has also been made. It's not necessarily, I don't know what their relevance, what their status is, an SRO or as a rule or whatever they call it, but the committee can determine its procedure, and it will be a procedure of the committee for the purpose of its functioning. Now, Section 3, my lord. Section 3 is exercise of original jurisdiction by the Supreme Court. Now, there was a question which was raised and which was asked when the petitioners were arguing that the committee is to first see whether the matter is, it has to come before the committee to determine if there is a question of public importance with reference to enforcement of fundamental rights, and if the committee thinks so, only then it will constitute a bench. And there was a question raised from the bench that would this not be an administrative power controlling a judicial function? And my response to that, my lords, is that if it is determined, it is held that it is an administrative function and it cannot be performed in a manner to control judicial powers, then my lords would surely come to the conclusion that this court will never exercise suo motu powers either, because while exercising suo motu powers, it is either previously it was the Chief Justice who first determined whether the matter was of public importance and relatable to enforcement of fundamental rights, and then constitute a bench. This is this tension which my lord had also while authoring rendering judgment. This doesn't answer the question whether the threshold of 184(3) is to be decided by the committee, as this law suggests, or whether it is the function of the court, whether it's a judicial power. That's the fundamental question. That is this not
judicial power? Because there is a threshold, you say so yourself that there's a threshold. So how can a committee be deciding it? And again, it goes to the fact that if the committee decides that doesn't meet the threshold, then the person that has filed the petition, they can't challenge that decision? My question is, there's a distinction between what is filed under 184 and the suo motu, and that's why. My question is, if the Chief Justice, just one person, as a master of the roster, could decide whether to take a suo motu or not, why not a committee? Yes, and that is why my response was that further, if providing guarantees, and my only question is, are we not accountable to the litigants? Absolutely. The Parliament is the representative of the litigants. If they want to change our procedure because they are not satisfied with our internal or institutional independence, that's their prerogative. And we are there to serve the litigants. And if I may, my Lord. Normally, you see, the cases would be marked by the Chief Justice, even if it's a 184.3. So I think the question of judicial power is secondary. First comes the constitution of the bench, and then judicial power is going to be exercised. Here we're talking about the constitution of the bench. It doesn't impair any judicial power. The question is, earlier the Chief Justice would mark the case to somebody. He would certainly mark it. I mean, I as a judge would not hear any case unless it's marked to me. And then all it says is that instead of the Chief Justice, the committee marks it. Judicial power is not in any way impeded because judicial power comes after the bench. Section 3 talks about invoking of jurisdiction, and that is what I was addressing. Specifically states that the committee would examine. Yeah, the word used is examine, and that's what I was addressing. For examination, if the committee is of the view that a question of public, this is exactly so it's a judicial power. Yes. So how can the committee on the administrative side exercise judicial power? मैं यही आपको कह रहा हूँ कि if you are minded to hold कि ये जो overlap हो गया है कि administrative function और judicial function को control कर रहा है, you would have to inevitably hold that going forward there will never be a suo motu exercise of powers, because that's exactly what the Chief Justice to do. They will first examine it and then constitute a bench, और यही वो tension थी जो आप paragraph 53 Please take one question from this side, AG sir. Oh, sorry. The Article 184 begins with the word Supreme Court. What does that mean? Supreme Court means all the judges or only the Chief Justice? It's what Article 176, your ladyship, says is the Chief Justice and the judges of the Supreme Court. 184 I'm talking about. तो 184 में जो Supreme Court है, Supreme Court को जो है वो 176 से फ्लो करेगी. 176 में Supreme Court का मतलब है Chief Justice and all the judges. All the judges. No single person is the Supreme Court. It's all of you who are the Supreme Court. So while exercising jurisdiction, अब ये हो सकता है कि आप ये कहें कि नहीं, ये Section 3 जो है ये इस तरह से नहीं होगा, इसको हम रीड डाउन करेंगे और कोई भी एक्सरसाइज सारी कोर्ट बैठेगी और वो पहले देखेंगे कि ये थ्रेशोल्ड मीट होता है या नहीं होता है, and then you mean to say that by committee that could be. Mr. Attorney General, the committee is constituted of 3 members to see whether the case do fall within the ambit of 184(3) or not. The litigant would be invited to argue, or that would be only seen by the members of the committee themselves. If 2 out of 3 comes to the conclusion that it is not a case fit for to proceed with Article 184(3), would it not be defiance of right of audience and the Article 10A and all other due process? In continuation, and what remedy would be available to him, because this is an administrative order, they cannot be challenged in appeal except the chamber appeal under the rules. Mr. Attorney General, Section 3 is not actually saying that he's going to dismiss the petition at the administrative side. It's simply saying we look at the petition as the Chief Justice looks at the petition. He looks at it, it says a 184(3) petition, he marks it to a bench. It is not saying there is no consequence. Suppose he thinks there is no question, he'll mark it to some other bench. It doesn't say he'll dismiss the petition as to give a hearing to anybody. This is just to look at the file. My lord, ये जो threshold है administrative side पे day in day out basis पे हमें cross करना पड़ता है litigants on this side. यहाँ पे objection आ जाते हैं registrar के यदि ये meet नहीं. What's been happening? Number of 184(3) petitions have come up that the office has put objections. Yes. Not the judge, the office. Yes. जी one very low. बिल्कुल. ठीक है, उन्होंने objection लगा दी, not does not come within a parameter. chamber appeal में जाना पड़ता है. They've come to me some of the absolutely ridiculous kind of petitions. They're dismissed in my chamber
against an appeal is filed, the fact that you don't make available 84(3) does not mean you can't file a civil suit, does not mean you can't file an FIR, does not mean you can't go to 199, does not mean any other remedy. So this is done every day, we do it. Not 3 judges, 1 assistant registrar in the branch office says not maintainable, उसके खिलाफ अपील आती है. वो कितने लोग सुनते हैं? 1 जज. उसके खिलाफ क्या अपील है? कुछ भी नहीं है. एंड ऑफ स्टोरी. ठीक है. तो यहाँ वो भी जुरिडिक्शन बढ़ गया है. वो आपने हमें वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास हमें दे दिए हैं, उसके पास होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास, तो रहने दें उसके पास, वो बेशक बेहतर तयन कर लेगा, जो खुश नहीं होगा वो अपील में होगा. अब तो ये तो बल्कि ज्यादा उसको अहमियत दी जा रही है रादर देन उसको निगेट कर रहे हैं. और राइट तो नहीं है 184(3) का राइट, आपके सारे महफूज हैं जो आइन देता है, जो कानून देता है. ये नहीं कि आपने 184(3) की पिटिशन डिसमिस कर दी, 99 में आप नहीं जा सकते हैं, या आप सूट नहीं फाइल कर सकते हैं, जो भी चीज़ नहीं. यहाँ तो लोग अजीब अजीब चीज़ें, जी मेरा इससे पैसे उधार हैं, वो जाके 184 डाल दिया उसने, हमने उसको डिसमिस कर दी. रजिस्ट्रार ने राइटली मेंटेनेबिलिटी भी किया, अपील है, हमने उसको डिसमिस कर दिया, इवन दो जस्ट वेस्टेड अननेसेसरी टाइम ऑफ अ जज ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. So I don't know what are we taking away? Back to the same question, what